So very well, good morning to all. Welcome back in today's science class. So once again, I welcome back to all the students on the YouTube channel of St. School Sheoganj. Now, dear student, in the last class we discussed about the important topic that is dispersal, and in that we also discuss about the structure and functions and different parts of a human eye, how the image is formed and how this is passed to the brain. So in that class we discuss about the splitting of light, how this white light is consist of the different seven colors and how it is spread or split out into the different seven colors. So in that we discuss that the band of seven color, that is called what a spectrum. And then after we discuss about the different parts of a human eye. We discuss about the retina, we discuss about the iris, pupil, cornea. This all parts and their function we discussed in a previous last class. Now you everybody you know that this eyes is a very important part of our eyes, by which we are enabled to see the many objects. This colorful world we can see only by the eyes. So eyes is a very important part of our body, or by this work like what this part of our body is just work like a camera. Okay, so we can take care about this our eyes. We should take the nutritious food which is helpful for our eyesight, or which maintain the eyesight of our eyes. So now, as you know that by the some injuries, by the some accidental case, by the aging, we are not able to see the object clearly. Means some situation is there in our life, some condition is there. कुछ ऐसे स्टेज आते हैं हमारे लाइफ पे, either you can see that at your in your family, your grandparents may be suffering by these problems, कि वो किसी चीज़ को ना ठीक से देख नहीं पाते हैं, इधर या तो फिर वो धुंधला सा दिखता है या फिर ठीक से देख नहीं पाते, कभी जो है उनको पास की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते, समटाइम्स दे कैन नॉट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स. सो दिस ऑल प्रॉब्लम इज नोन एज व्हाट द डिफेक्ट ऑफ विजन. मीन्स विजन में जो आई साइड में है प्रॉब्लम आ जाता है. सो नाउ today we are going to discuss or we are study about the different types of vision. What are the reason, what are the causes for all the eye defects, what are the main different defects of eye. Means eye से related क्या क्या problem हो सकती है, क्या क्या बीमारियाँ डिजीज हो सकती है, कौन से टाइप की, हाउ इट इज हैपन, किस कारण से वो होती है ना, व्हाट आर द सॉल्यूशन, व्हाट आर द रिजॉल्व, हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ कैन वी सॉर्ट आउट दिस ऑल प्रॉब्लम्स, and what happened in that condition, in that defects. So we discuss one by one. So normally there are in your textbook we discuss the different four types of defects of vision. First one, the short sightedness, that is also known as myopia. Short sightedness, that is also known as myopia. Then we discuss about the long sightedness, means hypermetropia. Okay, third things we discuss about the astigmatism and last one cataract. These are the four defects that mentioned in your textbook. So we study in detail about this all the four defects or a disease related to the eyes or a problem related to the eyesight. So we discuss one by one. First we are going to discuss about the short sightedness. So normally this short sightedness is known as what? Myopia. So short sightedness means we can, or a person can see the object clearly but cannot see the far object. Means in this defect, short sightedness means short distance वाले object, the object which placed or kept at the short distance, यानी पास की जो images होती है, पास की जो कोई भी object होते हैं, वस्तु होती है, उनको अपन clearly देख सकते हैं, but we are not able to see the object far away. यानी distance पे दूर वाली object को, दूर के ऑब्जेक्ट को we are not able to see them clearly, but we can see the object clearly, that is at the short distance or nearby us or nearby a person. यानी simple thing is that कि पास की वस्तुओं को आराम से देख सकते हैं, we can able to see the object that kept nearby us, but we cannot able to see the object far away. Okay, so this condition is called what?
that is called short sightedness or myopia. Why this is? This is due to the thickness of the eye lens. इसमें क्या होता है? Eye lens जो होता है that became thick. वो क्या हो जाता है? That became a thick. And due to this thickness, the image is formed before the retina. In this case, what happened? The image is formed before the retina. Okay, before the retina means in myopia or short sightedness, as I told you that कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन तभी देख पाते हैं जब उसकी इमेज क्लियरली कहाँ बनेगी, when it is formed at the retina. If it is formed before the retina or after the behind the retina, we cannot see the object clearly. So here this is due to the thickness of the eyelids and the image is formed before the retina. That's why we are not able to see the object clearly. Ciliary muscles do not relax enough to make the eyelids thin. और इसमें जो ciliary muscles होती है वो relax नहीं कर पाती है. It's not relaxed enough to make the lens thin. That's why the image is formed before the retina. Next thing, in this defect, the image of the object is formed before the retina. As I already written here, these things I mentioned again here. Means the image is formed before the retina. That this is the reason why we are not able to see the object clearly. Now, how we can sort out this problem? Means what are the correction? What are the things? What are the solution for this problem? Means how we resolve this problem. So this problem can be resolved by the what? By using the spectacles containing the concave lens. The concave lens, which is known as what? The diverging lens, जो diverse कर लेता है light को, rays को. तो diverging lens को या concave lens के spectacles अपन use करके, ऐनक use करके we can sort out this problem. And by using this concave lens, जब वो light को diverge करेगा तो that makes the image of object on a retina, retina. Exactly that image is formed by using the appropriate concave lenses or diverging lens. We form the image on the retina and we sort out this problem. We resolve this problem. Now next come to the long sightedness. Long sightedness means long means the object that kept at the far away, at the long distance means दूर की चीजें, दूर वाली जो वस्तु है, दूर की जो ऑब्जेक्ट्स है वो अपन क्लियरली देख पाते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट दैट आर केप्ट नियर बाय. मीन्स पास वाले, जस्ट लाइक वी कैन नॉट एबल टू सी, वी कैन नॉट रीड द बुक क्लियरली. बिल्कुल पास से बुक को नहीं पढ़ पाते, लेकिन दूर जो है वहाँ पे पेड़ है, गाड़ी खड़ा है, उसको अपन वी कैन सी द क्लियरली. सो दिस थिंग्स कैन बी हैपन इन long sightedness or a hypermetropia. Okay, so a person can see the far object clearly but cannot see the nearby object with the clarity. कि दूर की वस्तु को ना, दूर जो चीजें है, ऑब्जेक्ट है, उसको तो अपन क्लियरली देख पाएंगे, लेकिन पास वाली चीजें को नहीं देख पाएंगे. इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, है ना. निकट दृष्टि यानी निकट की, पास की जो साइड से ना, पास की ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नहीं देख पाते, उसको कहते हैं लॉन्ग साइटनेस. मीन्स दूर की ना, दूर दृष्टि. नाउ दिस आई लेंस बिकेम थिनर. जो शॉर्ट साइटनेस में थिक हो जाता है और इसमें जो आई का लेंस होता है दैट बिकेम थिनर. सिलियरी मसल्स आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट. इसमें रिलैक्स नहीं कर पाता, बट इसमें सिलियरी मसल्स आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट enough to thicken the eye lens. That's why the image is formed behind the retina. In that case we are not able to see the object clearly. So image is formed behind the retina. This is the cause. That's why we are not able to see that object. And this problem can be sorted out or resolved by using the appropriate spectacles made up of convex lens, which is known as a conversing lens. Short sightedness में we use concave lens or diverging lens spectacles. Here we are using the spectacles that made up of convex lens or conversing lens. जो क्या करेगा, जो image which is formed behind the retina that focused on the retina, means appropriate बिल्कुल fixed retina में ही image बनेगी by using this convex lens. Now next problem, that is what astigmatism. We discussed this two things. Third one is astigmatism. Astigmatism means इसमें जो image होती है, या तो फिर this image is formed maybe
बिफोर द रेटिना और बिहाइंड द रेटिना, या तो पहले बन जाती है या फिर रेटिना के आगे बन जाती है या फिर पीछे बन जाती है. And in that conditions we are not able to, and this problem is arises due to irregular shape of cornea usually caused for this astigmatism. यानी astigmatism का जो रियली कारण है उसमें कॉर्निया जो होता है ना, कॉर्निया इज द पार्ट विच वी डोनेट ड्यूरिंग द आई डोनेट. जब आई डोनेट करते हैं तो उसमें कॉर्निया जो पोर्शन होता है ना, उस पोर्शन को डोनेट किया जाता है. सो इरेगुलरली शेप्ड हो जाता है. Cornea became irregularly in shapes due to which what happened, this astigmatism is taking place, and this condition is corrected by using the cylindrical lenses. Means ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को, इस डिफेक्ट्स को we can sort out by using the cylindrical lens. यानी कि इसमें जो स्पेक्टिकल्स बनेंगे वो किस टाइप के होंगे, cylindrical होंगे. ओके. Now you can see in your textbook page number 98 more details are given about this astigmatism. Just I read this paragraph. Everybody you see in your textbook page number 198. Like myopia and hypermetropia, astigmatism is also a refractive error. In an astigmatic eye, light falls to come to a single focus on the retina to produce a clearer vision. Instead of multiple focus points occurs. These points, इसमें क्या होता है, मल्टीपल फोकस होते हैं. मीन्स ये जो फोकस होता है, ये इमेज होती है, दैट मे बी इन फ्रंट ऑफ रेटिना और बिहाइंड द रेटिना. इट्स नॉट फॉर्म एग्जैक्टली ऑन द रेटिना. दैट्स व्हाई वी द viewers cannot see the object clearly. And astigmatism result in the blurred or distorted vision. This condition is corrected by using the spectacles made up of the cylindrical lens. A cylindrical lens is focuses the light into a line instead of a point. यानी पॉइंट के कंपेयर में वो लाइट को बिल्कुल एक लाइन में फोकस करता है. As a spherical lens would this things. Last one, the fourth defect of vision, that is what, that is cataract. That is a cataract. And cataract means it became what, the cloudiness of the lens. Lens के ऊपर क्या होता है, कभी in some cases the liquid or fluid are deposited on the lens. Lens के ऊपर जो है वो fluid है, liquid है, कुछ पानी सा जमा जाता है, जिसको अपन मोतिया बन कहते हैं ना, मोतिया बन जाता है. यानी कि कुछ लिक्विड्स होता है, जो फ्लूइड्स होता है, वो लेंस के ऊपर एक तरह से ना डिपॉजिट हो जाता है, सरफेस लेयर सा बन जाता है, जिसके कारण जो है वो अपने को बिल्कुल क्लियरली विजन नहीं हो पाता है. इट्स मेक अ क्लाउडीनेस ऑन द लेंस. सो नॉर्मली या तो फिर इसको ऑपरेशन, सर्जरिकल ऑपरेशन के थ्रू उस क्लाउडीनेस को, उस जाली को हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है. अदरवाइज इट कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग और applying a appropriate lens या फिर replacing the lens. So this problem, in this condition, so the lens becomes the cloudy and person cannot see the object clearly. यानी lens जो होता है कैसा होता है, opaque हो जाता है, cloudy जैसा हो जाता है, उसके ऊपर layer सा बन जाता है. Okay. The most common causes for this problem are aging. और इसका जो main problem होता है, this problem is faced by the people due to the एजिंग और इन ओल्ड एज. मीन्स जैसे जैसे एज होती जाती है, उम्र होती जाती है, जस्ट लाइक यू कैन सी दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय मेनी बाय द ओल्ड पीपल और एज्ड पीपल. जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना, वो ज़्यादा इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं. बिकॉज के एज के कारण क्या होता है, धीरे धीरे उनकी आंखों के ऊपर जो है एक जाल सा बन जाता है, मोतिया सा बन जाता है, क्लाउडीनेस सा बन जाता है, लेयर ऑफ लिक्विड डिपोजिटेड ओवर द lens and thus become the cloudy. So this is the reason for a defect of this. This problem mostly arises in the old ages and other causes, and other than this age के अलावा okay, if we are taking the appropriate diet or balanced diet हो सकता है ये प्रॉब्लम जो, लेकिन कुछ और भी इसके जो है वो रीजंस हो सकते हैं. मे बी ओवर एक्सपोजर्स टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण भी हो सकता है, सम इंजरी के कारण भी हो सकता है ना. This may be caused due to some injury, overexposures to the ultraviolet radiations. These are the other causes other than age. Okay. So this problem is
corrected by what? This problem is corrected by surgically removing the lens and replacing it with the artificial lens. जो लेंस है उसको अपन रिमूव करके जो आर्टिफिशियल लेंस को क्या करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं या फिर रिप्लेस्ड करते हैं. सो बाय दिस, बाय ऑपरेशन के थ्रू अपन क्या करते हैं, दूसरा लेंस डलवाते हैं ताकि हमारे को वापस क्लियरली विजिबल, कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो सके. सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड आउट बाय दिस रिप्लेसिंग द लेंस. सो दीज आर द 4 main important defects or diseases related to the vision problem, related to the vision. Now next we are discuss about the visual impairment. Visual impairment is a disability of a person, we cannot able to see the ऑब्जेक्ट क्लियरली, पार्शियली और फुली. यानी जो किसी भी वस्तु को या तो जन्म से या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण, सडन एक्सीडेंट के कारण, इंजरी के कारण वो किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाता है या फिर उसको बिल्कुल ही अंधा हो जाता है ना, ब्लाइंड. सो वो these people are known as a visually impaired man or a disabled person. So the inability to see the object completely or partly is referred to a visual impairment. Visual impairment can be caused due to the accident, due to some problem, injuries, maybe due to some eye diseases. It can also be the present from a birth, or this problem can be arises since the birth. जन्म से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, कुछ डिजीज के कारण भी हो सकता है. Many reason is there for this. The partially or completely blindness may be due to the malfunctioning or non-functioning of a cornea. यानी cornea की, if the cornea is not function properly, this can causes this a problem. This problem also arises due to the improper functioning of lens and retina or optical nerves. हो सकता है retina ठीक से काम नहीं करे, there are the defects in retina, maybe defects in the eye lens, maybe defect in cornea or optic nerves, maybe damage due to some accidental cases. So these are the reason for the visual impairment, जिससे अपन दृष्टि से related, vision से related problem हो सकती है. Now depending on the causes, some visual impairment can be treated with a surgery or medicines, while some cannot be the treated. कुछ प्रॉब्लम जो है they can be sort out by using surgery, ऑपरेशन के थ्रू वो ठीक हो सकता है, मेडिसिन के थ्रू ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ जो है वो परमानेंट डैमेज हो जाने के कारण this type of things cannot be resolved or cannot be treated at all. और फिर वो परमानेंट क्या हो जाती है, एक तरह से परमानेंट प्रॉब्लम हो जाती है, परमानेंट डिफेक्ट हो जाता है विद अवर आईज. अ पर्सन विद द विजुअल इम्पायरमेंट डिपेंड्स मोर ऑन अदर सेंसरी परसेप्शंस सच एज साउंड. इसके साथ साथ है ना, विजुअल प्रॉब्लम तो हो ही होता है, उसके साथ साथ में किसी को साउंड प्रॉब्लम भी होता है, मीन्स द पीपल्स कैन नॉट हियर द साउंड, है ना. सो दैट दे यूज हियरिंग मशीन्स, ऑडिटरी एड्स, है ना, ऑडिटरी एड्स वो यूज़ करते हैं. किसी को कुछ टच सेंसेशन की प्रॉब्लम होती है, टच नहीं कर, फीलिंग नहीं होती है, फील नहीं कर पाते किसी ऑब्जेक्ट को, हाँ, सेंसरी परसेप्शन सच एज साउंड, टच, स्मेल, किसी को स्मेल नहीं आता है. सो ये भी क्या है, दीज आर ऑल्सो द डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सेंसरी परसेप्शंस. However, there are the many opticals or non-opticals aids or the instruments or the devices or tools or machine is there which is used to resolve this type of problems. सुनने की प्रॉब्लम है तो उसके लिए we can use the hearing aids, हाँ, सुनने की मशीन जो अपन कान में यूज़ करते हैं, हाँ, छोटी सी डिवाइस आती है, हाँ. टचिंग की प्रॉब्लम है तो उसको भी शॉर्ट आउट करते हैं, स्मेल की प्रॉब्लम है उसको भी करते हैं, आंखों के विजन प्रॉब्लम है तो वी यूज द स्पेक्टिकल्स मेड अप ऑफ द कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस, हाँ. कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए अपन कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं ना. सो इन प्रॉब्लम को अपन शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, उनका इलाज भी अपन कर सकते हैं. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट सम ऑप्टिकल एड्स. ऑप्टिकल एड्स मीन्स कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, some instruments, some devices which enables us to see the object clearly. Suppose that spectacles made up of concave lens, convex lens, cylindricals, binoculars. Okay, so the contact lens है, magnifiers है, lenses है, binoculars है, ये सब क्या है, these are the optical sets. And some are the non-optical sets. Non-optical sets means other than the eye defect. आई डिफेक्ट से रिलेटेड उनके अलावा जो दूसरे एड्स से, दूसरे
instruments other devices which we used that is called a non-optical aids. So in that first we discuss auditory aids. Auditory aids means the instruments, device or tools which is used to hear the sound properly. Suppose that कोई भी डिफ है जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, the persons who cannot hear the sound clearly, so he or she may be use what the hearing aids or a hearing machine, कान में सुनने वाली मशीन यूज करते हैं. तो that is called what auditory aids or auditory device or hearing device. So this is what a non-optical device. Okay. So these aids provide the sensory perceptions in the form of sound. These include tape recorders, audio books. टैप रिकॉर्डर सुन के भी वो यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, हियरिंग मशीन्स भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ डेज a lot of study material is converted into the audio language forms to enable the students with the visual impairment to pursue their study at the any level. मीन्स बहुत सारे ऐसे आजकल जो है ना ऑडियो बुक्स हो गए, रिकॉर्डेड बुक है जो अपन सुन के, जो यदि कोई देख नहीं पाता तो उसको सुन के स्टडी कर सकता है, अपनी पढ़ाई कर सकता है और उस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कुछ भी आगे लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. ओके, मीन्स दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वी कैन नॉट एबल टू डू मच मोर थिंग्स और वी कैन नॉट एबल टू गेट द सक्सेस इन अवर लाइफ. वी ऑल्सो सक्सीड बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ रिकॉर्डेड बुक्स. बाय हियरिंग वी कैन गेन द नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड. टेक्टाइल एड्स मीन्स जिस लोगों को जो टचिंग प्रॉब्लम होती है, सेंसेशंस है ना, टच फीलिंग में सेंस नहीं कर पाते, स्किन जैसे प्रॉब्लम होती है. सो दीज आर द टच बेस्ड रिसोर्सेज. दे प्रोवाइड द परसेप्शंस थ्रू टच. Indentations means the etching and markings. They help the visual challenged or recognize things. Braille systems or braille documents and some special types of the slates are the examples of the tactile aids जिनको touch करके feel करके हम we can obtain the knowledge, we can gain the knowledge about the world. Electronic aids means electronic devices, electronic tools. This includes the specialized aids such as the dictaphones, speech recognition software, talking calculators, voice boxes, interactive touch based computer software. ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, ओके, न्यू मशीन्स या टूल्स है जो क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसका यूज़ करके जो भी विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, डिफेक्ट वाले पर्सन होते हैं, विजुअली डिफेक्टिव पर्सन होते हैं, दे कैन यूज दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड दे कैन कैरी आउट और कंटिन्यू देयर स्टडी. नाउ द ब्रेल सिस्टम. ब्रेल सिस्टम दिस इज द इंट्रोड्यूस बाय द लुइस ब्रेल ना. लुइस ब्रेल जो थे उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. एंड दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर व्हाट द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन फॉर टू कंटिन्यू देयर स्टडी और carry out their study. So the braille system is based on the sensory perception of touch. ये जो है वो sensory perception based on the touch means touching करके. braille system में क्या होता है, there are the some alphabets or letter that forms in the dot forms or raised form. उभरे हुए होते हैं, डॉट्स के फॉर्म में होते हैं जिनको टच करके अपन ना टच करके महसूस करके उसको समझ सकते हैं. So Louis Braille developed the systems when he was the merely 16. He formally published his findings in the 1829. In this system, the text is represented on a thick paper in form of patterns to raised dots. एक बड़े से मोटे से पेपर के ऊपर डॉट के फॉर्म में कुछ डॉट्स रेज किए होते, उभरे होते हैं जिनको टच करके अपन समझ सकते हैं, अपन पढ़ सकते हैं उसको. These dotted patterns or the symbols represent the alphabets or the numbers. Means उनको वो टच करते, जैसे अंधे लोग होते तो वो उसके ऊपर ना हाथ रख के उसको टच करके उस पैटर्न को समझ के वो पढ़ सकते हैं कि ये क्या अल्फ़ाबेट्स, कौन सा नंबर है और क्या लेटर लिखा हुआ है. A visually challenged person can fill these raised dot with the touch of the fingers and recognize the alphabets or the number. और इस तरह से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं नंबर को और लेटर्स को. और इस तरह से वो जो भी the peoples who are not able to see the things clearly, they can continue their study है ना by this methods or braille system.
In the same way, a person can also write the text in the braille using the instrument like the one shown that you see in the figure, that page 199 of your textbook. Now, this, so we know that this eye is the part of our body. One is the important, or you can say that this colorful world we can see through this eye. So this eyes is a very important part of our body and we should care about it. So हमारा क्या, हमारा दायित्व ड्यूटी बनती है कि हम अपने आईज के जो है वो अच्छी तरह से देखभाल करें, ध्यान रखें उसके बारे में. So how we can take care about our eyes. So now you see the page number 200, the last topic of this chapter. Then after we finished this chapter, the care of eyes. Our eyes are the precious, very costly, expensive, very precious, very important part of our eyes. So we should take care about it. These organs are very sensitive and delicate. Hence, the care and precautions should be taken to maintain the healthy eyes. So some are the ways, some are the tactics, some are the methods by which we can take care about our eyes. So first things, we should wash our eyes with the water, with the clean water, with the clean water. बिल्कुल जेंटली, ज़्यादा रब नहीं करना आपको, ज़्यादा उसको ना प्रेस नहीं करना या ज़्यादा रब नहीं करना है. हल्के से आप जो है अपने आँखों को बिल्कुल साफ़ सुथरे पानी से धोना है और साफ कपड़े से, साफ टॉवल से, जो क्लीन टॉवल है उससे जो है वो साफ करना है. ओके, डोंट प्ले विद द शार्प टूल्स. शार्प टूल से भी नहीं खेलना है क्योंकि कुछ भी आपके आंख में हो सकता है, किसी का भी कुछ भी शार्प टूल्स, नुकीली चीज़ कोई लग जाए तो वो भी इंजरी के कारण हो सकती है. यू कैन lose your vision by that type of injury. Okay, so frequently washing of eyes not only remove the dirt but also help in getting rid of tiredness. यानी कि कंटिन्यूली आप आँखों को साफ सुथरे पानी से धोते रहोगे तो उससे आलस ही नहीं जाएगा, बल्कि है ना, डर्ट जो होगा वो भी हटेगा और साथ साथ में आलस भी नहीं रहेगा, टायर्डनेस भी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल फ्रेश अपने आप को महसूस करोगे. We should not rub the eyes if some things such as the dirt or the dust enter our eyes. We should wash eyes with the water and visit the doctor if the problem is persist. यानी आँखों को रब नहीं करना है. कुछ लोगों की आदत होती है ना कि आँखों को ऐसे ऐसे बार बार रब करते, बिल्कुल रेड कलर, लाल टाइप की हो जाती है आँखें. यदि कुछ उसके अंदर यदि डस्ट गिर भी गया, कुछ मिट्टी चली गई है, कुछ भी चला गया है, तो प्लीज़ डोंट रब योर आईज. You should wash your eyes with clean water, and if you have some more problem then you just visit to the doctor. है ना, खुद अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है, एक अच्छे ऑप्थोलॉजिस्ट से, जो भी आई का डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करना है. We should not read in a dim light as well as in a moving vehicles. डिम लाइट, कम लाइट में कुछ लोग होते हैं ना, कॉर्नर में बैठ के कम लाइट की रोशनी में पढ़ते रहते, तो ऐसा नहीं करना है. और ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग प्लीज डोंट रीड एनीथिंग. ओके, कि वहाँ पे मूविंग कंडीशन होती है, मूविंग व्हीकल्स में होता है तो वहाँ पे आपके आइज पे ज़्यादा होता है. डोंट प्ले द वीडियो गेम्स ऑन द कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स. दिस ऑल्सो डोंट वॉच द टेलीविजन्स और टीवी फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड और कंटिन्यू. डोंट सीट. कुछ लोग होते बिल्कुल पास में बैठ के मूवी या फिल्म या गेम खेलते रहते, तो वो भी आपकी आंखों के लिए क्या हार्मफुल है. प्लीज डोंट डू लाइक दिस. While watching the televisions, we should watch from a distance. The television should not be watched at the stretch for the long time. वो भी आपको आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. Blinking the eyes helps to reduce the strain while the studying or the working on a computer. We should consciously the blink our eyes frequently. We should not look at the sun directly during the eclipses. मीन्स सोलर, जब लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स होता है ना, ग्रहण होता है, तो डायरेक्टली आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण वो नहीं देखना है. डोंट सी द इक्लिप्सेस डायरेक्टली फ्रॉम योर आईज. यू शुड यूज सम स्पेक्टिकल्स. ओके, सो it is very dangerous. We should either wear the special goggles or the glasses or look at the projected image of sun during the eclipses. Vitamin A deficiency can lead to the night blindness. So you know that for the healthy eye or the good vision, we should consume more food or nutritious food that should be rich in vitamin A. तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, कैरेट है,
इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंज्यूम करनी चाहिए. We should consume a healthy balanced diet and eat plenty of fruits and vegetables, and especially those things or food which is rich in a vitamin A, such as the papaya, mango, carrot, pumpkins, क्योंकि ये आपके आई साइट को अच्छा बनाएगा, आपकी आंखों की रोशनी के लिए ये काफ़ी यूजफुल है. सो यू शुड take more and more diet which is rich in vitamin A, which makes a healthy vision. If a person is unable to see the near or far things clearly, eye checkup should be done promptly. यदि कुछ आपके आई से डिफेक्टेड है, यदि आपको पास की चीज़ या दूर की चीज़ वस्तु नहीं दिख पा रहा, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, आपको सही से लेटर नहीं दिख पा रहे, तो तुरंत क्विकली विदाउट एनी डिले यू जस्ट कंसल्ट टू योर डॉक्टर. ओके, चेकअप योर आईज है ना. And we should use the wearing appropriate glasses can correct the problems and prevent the further damage. कुछ लोग some people are using the glasses ना spectacles, एनक यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू वो उसको यूज़ नहीं करते हैं. क्लास में बैठे तो ना उस ऐसे लगता है जैसे शर्म के मारे वो नहीं पहन पाते. तो ऐसा नहीं करना है. आप इफ़ यू यूज़ स्पेक्टिकल्स, आपके नंबर है, आपके स्पेक्टिकल्स है, तो आप उसको रेगुलरली यूज़ करो ताकि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी. अदरवाइज इट्स more issue for you, or it may be harmful for you. So these are the some steps, some ways by which we can take care about our eyes and we can maintain our healthy vision. Okay, so this is all about this chapter. If you have any difficulties regarding this chapter, any topic you feel that it's difficult for you, you can't able to understand any topic of this chapter, you can ask me personally or through the WhatsApp message, or you can clear your problem through the Google Meet class. Thank you. Have a nice day.